Dear friends, I hope my audio is clear to all of you. So you are just requested to type start S for start in the chat box so that then we will proceed for the today's session. So all of you have to respond S for start in the chat box, and we will start today's session. So yesterday we have taken the in previous lecture review of the coordinate system. So we have seen that two coordinate systems we use in the AutoCAD. So that is relative coordinate and second one is relative polar coordinate. So relative polar coordinate जो system है ये हमारे लिए ज़्यादा useful है because we can draw the inclined line and all these things. So in previous lectures we have seen the various draw commands wherein we have seen that how to draw a line, then polyline, and then arc, and then circle, and then ellipse, then rectangle, and then polygon, and point, and all other things. So that we have seen already. So now today we will proceed with the two new important modes. हम लोगों को modes के बारे में भी जानना है, and that two modes that today we will learn, and they are very much important. Based on that, today will be one of the small assignment that you have to answer in your notebook. So we will start. I will just share my screen and then we will start with the AutoCAD. So my screen is visible to all of you. I have started my AutoCAD window. Now here we have already seen that we can use the grid mode. Sorry, this is the grid mode. So at the bottom you can see that is the grid mode. So when I start the grid, so this grid is appeared on the screen. But I cannot use this grid unless and until I have to make the use of snap mode. तो मैं ग्रिड को ऑन और ऑफ कर सकता हूं, लेकिन ग्रिड को ऑन करने के बाद में ये जो ग्रिड के पॉइंट्स है, ये जो ग्राफ पेपर के जैसी ग्रिड आपको दिख रही है, इसके पॉइंट्स को क्लिक करके रेक्टेंगल और ड्राइंग बनाने के लिए मैं इसका ज्यादा यूज नहीं कर सकता हूं, बिकॉज आई कैन नॉट एग्जैक्टली क्लिक दिस ग्रिड पॉइंट्स. तो उसके लिए फिर हमारे पास में हमारे माउस में एक मैग्नेटिक पावर आनी चाहिए जो इस ग्रिड के पॉइंट को एग्जैक्टली क्लिक कर सकेगा. तो उसके लिए मेरे पास में जो ऑप्शन है वो है स्नैप मोड. तो मैं स्नैप को मोड को भी ऑन रखता हूं. सो जब मेरा ग्रिड मोड सिर्फ ऑन है और मैं ट्राई करता हूं कि मैं लाइन कमांड से यहाँ पर कुछ एक आधा स्क्वायर मैं एग्जैक्टली बनाने की कोशिश करूं, तो कितना भी आपने माउस पे कंट्रोल कर लिया तो भी आप एग्जैक्टली ग्रिड पॉइंट के ऊपर रेफर करके रेक्टेंगल नहीं बना सकते हैं. सो यू कैन जस्ट सी दैट दिस आई हैव ट्राइड. बट आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कॉर्नर जो है दोनों भी ये बराबर एक दूसरे को टच नहीं हुए और ये ग्रिड पॉइंट अलग जगह पे है, मेरी लाइन अलग जगह पे निकल रही है. So here also you can see that the grid point is going on another direction and this corner is going at another location. So this may happen. So to avoid this, what we have done, so we are side by side we are also making the snap on. So snap mode को मैंने on कर दिया अभी. So now grid command line पे लिख के आ गया snap on हो गया करके. Now my grid is also on and snap is also on. You can see that both these modes buttons are now blue. दोनों भी ब्लू कलर के हो गए. सो विथ दिस मोड नाउ आई कैन यूज द ग्रिड एंड स्नैप मोड. सो एट दिस टाइम सपोज आई विल स्टार्ट द लाइन कमांड. So you can just see that my cursor will particularly move on the grid points. So I will just take it here. I will click the point. I will take it here. Click the point. I will take it here. Click the point and I will take it here and click the point. So you can see that now it is possible for me to draw exactly the square with the grid point. So exactly grid point मेरा click होगा यहाँ पर. So this grid point was clicked by using the snap mode. तो इसलिए grid और snap mode that is F9 और F7 and F3. So F7 and F9. So grid and snap mode that we can use simultaneously. So similarly to that, there is another mode that we will learn today, and for that purpose I will just close this grid and snap. So I have closed that. Now instead of that I will use the another mode, and which name is already we have also seen the ortho mode also. That also we have seen. Ortho mode यदि शुरू रहेगा तो हम लोग रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट निकालने के लिए आसानी से लाइंस निकाल सकते हैं. सो दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू.
Now the another mode that we have to learn today is named as polar tracking. So function button is F10. So you have to note down. Today we will learn about the polar tracking option. So with the polar tracking, what is possible that, so that we will just see today. Now here at present the polar mode is off. अभी polar mode तो शुरू नहीं है. तो यदि मुझे अभी यहाँ पर पॉलीगन बनाना है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ एन हेक्सागन, तो हेक्सागन बनाने के लिए मुझे लाइन कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा. पहला पॉइंट मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और अब यदि मुझे हेक्सागन बनाना है तो मुझे यहाँ पर कोऑर्डिनेट टाइप करने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल आई विल टाइप at 20 less than 0. So it was an horizontal line. So because I have given the coordinate, now I will type at again 20 less than 60. So it was line. Then again we will just take the another line. So at 20 less than 120. Then at 20 less than 180. And then at 20 less than 240. Then at 20 less than 300. So to draw and again enter once again. So to draw this hexagon, I have used the relative polar coordinate. Remember, relative polar coordinate, which says that I have to enter the distance and angle. और at लगाने से वो coordinate जो है वो polar relative हो जाता है. So at for relative, 20 for distance and less than symbol and then degree angle. So in this way we can use. But ये hexagon बनाने के लिए instead of that we can also use the polar tracking. Polar tracking का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं. How that can be done? So that I will show you now. So now you just see that I have just click here on the polar tracking. So polar tracking mode को on करने से क्या हो जाएगा? अभी मेरा यहाँ पे लिख के आ गया है. So polar tracking mode is now on. Now I can use the line commands. But what happened that we have to identify. So I will just start line and now I will click it here. But now as soon as now you can just observe here the green dotted line is appearing. So this green dotted line is appearing because we are on the polar mode. अब ये polar mode on हो गया. मैं माउस इधर लेके जाता हूँ तो मेरी green line इधर में आ गई. So that dotted green line is appearing. It is only because of the polar tracking mode is on. So by making the polar tracking mode on, you will get a dotted line at particular angle. So at present, it is the line dotted line which is having 0 angle. So you can just see that your distance is 33.41 something and less than 0 degree. So that is indicating on the screen. So less than 0 degree means that is the angle line which is having 0 degree angle. So here you can just see that when I will move my mouse upward. So again at some angle this dotted line is appear. Now you can just see that. So what is the angle here? So here now it is showing at less than 45 degree means this is the line at 45 degree angle. So that green dotted line is appearing because polar tracking mode is on. तो हमने अभी यहाँ पर F10 प्रेस किया है, फंक्शन बटन F10. So it is for the polar tracking mode. So because of that polar tracking mode is on. So here we can see that on our screen we are getting this dotted line. Now I will just move my cursor on the upward direction. So ऊपर में जब upper कर लेके जाऊंगा, so now you can see that the line is going up and the angle is given as 90 degree. So here now I will again move my mouse in this direction. So again you will getting one line in this direction. So that is again because of the polar tracking mode and the angle is 135 degree. So from all this, I want to know from you that what is the angle set for polar tracking. You have to give the answer in chat box कि अभी यहाँ पर polar tracking mode के लिए angle कितना set किया गया है. So what is your opinion? Now when I am trying to draw this line, so it is showing at the 0 degree, then it is showing here at some angle, then it is showing here at some angle, and it is showing at here angle. So what is the angle set for this green dotted line? Green dotted line कौन से angle के multiple में आ रही है अभी? So that is the question for all of you. You have to type your answer in the chat box. What is the angle of this
green dotted line appearing automatically in the AutoCAD. So that we have to indicate. So I think that you are not listening to me. So what is your opinion that here this line is green line is shown at an multiple of 45-degree angle? That is the simple answer. So this here is 45-degree, then again I go to 90-degree, then again I do. So it means that at present my angle for polar tracking is set for 45. So what I will do now with the angle 45, I can try to draw the octagon also. Octagon बना सकता हूं मैं अभी. तो कैसे करेंगे? So I will just now, because the angle is given by polar tracking, I have to only type the distance. That is the simplicity. So मैं अभी यहाँ पर सिर्फ टाइप करूंगा 20. एंगल मुझे टाइप करना जरूरी नहीं है. So angle was taken automatically along that dotted line because that dotted line is appearing because of the polar mode is on. So I will just press enter. So you can see that the line is drawn. Now I will keep my mouse where I will getting that 45-degree dotted line, and then I will type again 20 and enter. So your line is 45-degree. Then I will track it again on the vertical direction and I will type 20, enter. Now again I will keep it in this direction. So it is showing again angle and then 20. Then I will keep it here. Again type 20, enter. I will keep it in this direction, 20, enter. I will keep vertical, 20, enter. I will click here, 20 and enter. So you can just see that and again press enter for close the command. So all this octagon I have drawn by only giving the distance, that is 20, and the 45-degree angle was automatically given because polar tracking mode is on. That you have to remember. तो किसी विशिष्ट एंगल में आपको ट्रैकिंग करना है, यानी डॉटेड लाइन आपको मिलनी चाहिए ऑटोमेटिकली ऑटोकैड की तरफ से. तो वो डॉटेड लाइन आने के लिए आपको पोलर ट्रैकिंग मोड ऑन रखना पड़ेगा. सो पोलर ट्रैकिंग मोड वी कैन मेक इट ऑन. सो उसके वजह से हमारा एंगल टाइप करने का काम बच जाता है. सो व्हेन वी आर यूजिंग द रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट, तो रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट के बजाय हम लोग सिर्फ डिस्टेंस टाइप करेंगे, एंगल आपको टाइप करने का काम नहीं पड़ेगा. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पोलर ट्रैकिंग मोड. सो आई हैव टू नाउ सेट टू द हेक्सागन के लिए मुझे पोलर ट्रैकिंग मोड के लिए एंगल कितना रखना पड़ेगा. सो टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स. So it shows that when you are giving response in the chat box, it means you are listening to me. Otherwise, only you are in the join the meeting, but you are not attentive. So therefore, you have to see that you are responding to the chat box. So for drawing the hexagon, what should be the angle for polar mode? पोलर मोड के लिए मुझे कितना एंगल सेट करना पड़ेगा हेक्सागन बनाने के लिए. सो टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स. So I am requesting answer in the chat box that what should be the value of polar angle for drawing the hexagon by using polar tracking mode. So type your answer in the chat box. So I hope that you are listening to me and you are just giving the response in the chat box. So what is the angle setting required for hexagon for polar tracking mode? So type your answer. So Riddhi has given angle that is 120, that is wrong. For hexagon, what is the angle we have to set for the polar tracking mode? Yes, Dhaneshwari has given correct answer. That is simple. It is very 60 degree. Hexagon के सारे साइड 60 डिग्री के एंगल के मल्टीपल में रहते हैं. So what I have now, see, this is the important step. Setting कैसे करना है अभी? So you have to see that this is the important step to learn in the polar mode. So what you will do? I will right click here on the polar tracking button. You can see at the bottom polar tracking F10 function button है. तो वो मोड के राइट क्लिक करूंगा मैं यहाँ पर. So here the display was there and now I will click on the setting. So once I have clicked the setting, so here again this dialog box, drafting setting dialog box is appeared on the screen, and you can see that because the F10 is on, so this is the tick mark. You can remove this tick mark. तो polar mode आप यहाँ से भी on और off कर सकते हैं. So now I have keep it tracking mode on, यानी tick mark है यहाँ पर. And whatever the angle I have to choose,
So I will take the incremental angle here as 60 degree or 30 degree. 60 degree अभी इसके अंदर है नहीं, तो अभी मुझे 30 लेना पड़ेगा. So I will take 30 degree, and then in the 30 degree, then I will click here in OK. So now my angle was set to 30 degree. So you can just check out that. So now when I will just start the line command, and then I will click very first point here. So you can just see that now the green dotted line will appear in the angle of 30 degree, 0 degree. Then I will, if I will go up, so it will go in the 30 degree. Then if I will go up, then it will go in the 60 degree. Then I will go up, then it will go in the 90 degree. So this is suitable for hexagon. So I will just click now dotted line in original direction, and I will type my distance as 20. So that green dotted line should appear. That you have to remember always. Then only you can type only distance. तो अभी 20 की लाइन निकल गई मेरी. Now I will keep it on the 60 direction. Again I will type 20, enter. I will track now in this direction again 20. So I have to give the direction of the line by using polar tracking mode, and only I will type the distance by 20 by command line. So you can just track this green line on the 60 degree angle, type 20 as a value. Again track this downward 60 degree angle, and then type 20, and you can see that the hexagon was completed. So this direction was given by the polar tracking mode, and only I have typed the distance. तो जो इसके पहले हमने कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करे उसके बजाय हम लोग ये पोलर ट्रैकिंग मोड के करके भी हम लोग हेक्सागन बना सकते हैं. सो नाउ द अनदर सिंपल क्वेश्चन इज दैट what is the angle to be set for the pentagon for the polar tracking mode? Type your answer in the chat box. So only 2 persons has given the response for the earlier question. So all the students present in this online class, they have to answer in the chat box. So what should be the angle setting for polar tracking mode? Polar tracking mode के लिए angle क्या रहेगा? Pentagon के लिए. Yes, the correct answer is 72 degree. So now I will again go to this polar mode. I will right click here on the polar mode button, and I will go to again setting, and now in the dialog box here the angle is 20 degree. I need 72 degree. So I will just make it here additional angle. I will tick mark this. I will click here on the new, and I will type 72 degree, and then I will click OK. So you can just see that in the setting, in the polar tracking angle is 72 degree. We have to select it. So here 72 we have to select, and then we have to click it OK. Now we will just check that. Suppose I have started line. So it is again there now it is showing me in the 30 degree only. So 72 degree मुझे लेना पड़ेगा. 72 के over line नहीं दिखा रहा है वो अभी. Yes, it is showing that. You can just check out. It is showing at the angle of 72 degree. So I have to make it 30 degree के बजाय वहां पे हम लोग 72 degree भी सेटिंग कर सकते हैं. So this I have went here, and then ये टिक मार्क हम लोग यहाँ से निकाल देंगे. एडिशनल एंगल हम लोग 72 वाला लेंगे, एंड आई विल क्लिक ओके. So now my polar tracking mode will act in the 72 degree direction. So I have started the line command. Then I will click here. Then for horizontal line, now polar tracking is not working because polar mode is off हो गया हमारा, तो इसको ऑन करना पड़ेगा. So here you can just see again it is showing 0 degree. So I will type 20. Now I have to search the tracking by 72 degree angle. So instead of this 20, so angle was given by 72 degree angle. यहाँ पे ढूंढेंगे हम लोग. Yes, this is 72 degree. I will type 20, enter. Then I will go here 72 degree tracking करेंगे 20, and again here we will track by 72 degree. So you can just see that this angle was wrong. So I have to type undo. You have to check it by 72 degree. Yes. So it is showing 210. Yes, now 20, and now again 72 degree angle. So some mistake, I think we have taken some wrong angle. So we have to make undo. So this line also it may have been changed. So this is 150. This is not actually 72 degree. This is 120 आ रहा है यहाँ पर, लेकिन 150 आ रहा है. ये हमको नहीं चलेगा. हमको चाहिए 72 डिग्री में.
So 72 degree angle is not coming here. So means you have to make the some setting here. So 150 के पहले आना चाहिए हमारा actually 144. So that is not coming here. So therefore we have to cancel this setting. So here I again right click, go to the polar setting mode, और ये जो 72 मैंने किया था इसको हम लोग डिलीट कर देंगे. Now instead of that I will type 72 here and then I will click OK. So just now we will try कि अभी मेरा एंगल पोलर ट्रैकिंग का 72 से आता है क्या. So line command I have started. Then just we will try to draw here. So this is 0 degree, 20 डिस्टेंस कर दिया मैंने, एंटर कर दिया. ऊपर जाएंगे तो 72 का एंगल आ गया. अभी 20 करके एंटर कर दिया. अभी ऊपर जाएंगे तो देखेंगे 144 का एंगल आ गया. सो दैट इज रिक्वायर 144 आ गया एंगल. अभी यहाँ पर ग्रीन लाइन 144 भी आ गई. 20 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे. इधर में जाएंगे 20 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे. इधर में जाएंगे तो 20 टाइप करके एंटर करेंगे. So now in this case the angle automatically was given by the polar tracking mode. 72 degree set किया मैंने. So I can able to draw this type of pentagon. So even you can complete the star also. So for that purpose again we can just try to draw the star. So I will just go here and then by using this I will again try to draw this line. So this will be suppose 20 and then this will be again 20. So you can just see that all these angle were given by the polar tracking mode. I will just dragging that in the particular direction. So 288 का एंगल दिखा रहा है, 20 टाइप किया मैंने. फिर इधर कर दिया उसने, 0 का दिखा है, 20 टाइप कर दिया. Then I have taken in this direction, so it is 20. Then I have taken in this direction again 20. Now I will take in this direction 20. So it is important that you should track along the polar direction. Polar direction is set to 72 degree. So 72 degree में जो green dotted line दिख रही है उसके along आपको कर्सर रखना है और डिस्टेंस आपको कीबोर्ड से टाइप करना है. So you will automatically get this direction of 72 degree and you type 20. So again here direction was given by the polar tracking mode and distance 20 and enter. So in this way now it is easy that कि आपको ये ऐसा करने के लिए हम लोग ट्रैकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो आई होप दैट पोलर ट्रैकिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो फॉर दिस टाइप ऑफ पोलर ट्रैकिंग वी कैन ऑल्सो यूज फॉर द ड्रॉइंग आइसोमेट्रिक मोड. तो आइसोमेट्रिक मोड के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. आइसोमेट्रिक मोड के लिए आपको ये जो एंगल है वो 30 डिग्री रखना पड़ेगा. सो आई विल जस्ट सेट द एंगल 32 and I will try to draw the now isometric object. So I will click here line. Now I will go here in the 30 direction, 20 distance. Now again I will go here 20. Now again I will go here 20. Now again I will go here 20. Now I will just vertically I will take suppose 5 and then I will horizontally I will take 10. Then vertically I will take 5. Then horizontally 10. So in this direction we require it is 10 and then we require vertically 5 and then I will come here. So this distance I require is 20 plus 20. So 40 I will take and then I will click it here. So again I have to make it undo. Distance vertical distance I require is 15. फिर इधर में जाएंगे तो ये डिस्टेंस लेंगे 20 का. फिर 15 नीचे आएंगे and then again we will go in this direction again that we will take 20. So you can just see that this type of steps I have tried to draw. अभी ये ऐसे करने के लिए हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं. सो 30 डिग्री में मुझे लाइन चाहिए ये वाली और इधर की लाइन भी 30 डिग्री में चाहिए और ऊपर की लाइन वर्टिकल चाहिए. तो ऐसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, पोलर ट्रैकिंग मोड को ऑन रखना है, उसके सेटिंग में जाना है और पोलर ट्रैकिंग का एंगल 30 डिग्री रखना है. सो यू विल बी एबल टू ड्रॉ द पोलर ट्रैकिंग मोड का इस्तेमाल करके आइसोमेट्रिक ड्राइंग हम लोग बना सकते हैं. सो यू हैव टू ट्राई डिफरेंट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग पोलर ट्रैकिंग मोड. सो डिस्टेंस यू हैव टू गिव बाय द कीबोर्ड से डिस्टेंस देना पड़ेगा आपको.
So in this way, you can just type this type of various steps with this type of command line, but you have to see that in continuation, all the lines should be drawn. So this is the, now here again there is one trick, so that now अभी मैंने क्या किया, पोलर ट्रैकिंग से मुझे एंगल मिल गया, लेकिन डिस्टेंस मुझे टाइप करना पड़ा. So that distance also we can give automatically by using some mode. So how that can be done? So that we will see here. We can use the polar snap. तो पोलर स्नैप के लिए स्नैप के मोड पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे. So I will give and I will click here as a polar snap. You can just see earlier we have used the grid snap. Now we can use polar snap. In the polar snap, I have given the option. So with this, once the polar snap was on, you can see here the difference. जब यहाँ पे ग्रिड स्नैप शुरू है, तो ये जो पोलर डिस्टेंस है ये मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ. नाउ दिस डायलॉग बॉक्स इज नॉट विजिबल. पोलर डिस्टेंस इज not changeable here. This is called as polar spacing. But when I click here in the polar snap mode is on, so you can just, this is that you can set the polar distance. So now this polar distance I will set to 10 and polar snap mode is on, and now I will click OK. So in such case, now what you can do, so we have to use the polar tracking, that is F10, and snap, that is F9. दोनों भी शुरू रखना पड़ेगा. सो स्नैप और पोलर, जैसा आपने ग्रिड और स्नैप यूज किया था, वैसे यहाँ पे पोलर और स्नैप आपको शुरू रखना है. सो वी हैव टू मेक ऑल द मोड ऑन, दैट इज F10 एंड F9. सो नाउ व्हाट आई विल गेट, सो जस्ट आई विल ट्राई टू ड्रॉ दिस लाइन कमांड. सो वंस आई हैव ट्राइड द लाइन कमांड, सो यू कैन जस्ट सी दैट the angle is set to 30 degree. So that is clear because polar tracking angle is 30 degree. Now you can just observe here that when I will move my cursor, so it is giving me the distance. You read that 10 less than 30 degree. Now I will move the cursor little bit ahead. So it is showing 20 less than 30. I will again move the cursor ahead. So it is giving me 30 less than, means you can take the distance in the multiple of 30. So that is the advantage. So with this, you don't need to type any distance on the keyboard also. And you can take the distance automatically in the multiple of 10. That is the beauty. So with this help, now we will try to draw one of the staircase. So now I will take this distance as 40. तो मैंने ट्रैक किया 40 के डायरेक्शन में. अभी मैं इधर ट्रैक करूंगा एंड आई विल ट्राई टू डिस्टेंस शुड बी 40. ये आ गया ट्रैक करके. So you can just see that small cross is appearing. So it is moving in the multiple of 10. So here it is 40, here it is 30, and the green direction was given by the polar tracking mode, and that distance was given by the polar snap mode. So now I will take it 40 and I will click here. So I don't need to type the distance or give the distance. So only I have to click. So this is the 40, click here. So here it is 40, click here. Now I will just take it 10, and now here I will get again 40 automatically, then again 10, now again 10 down, now again here I will take 20, now here again I will take 40, then I will take 20, then I will again take 20. Now you can just see I am just only clicking, मैं कोई distance type नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर. Now I will go 10 down, then again I will go here 40, I will again go 10 down, then 20 here in this direction, again here 40, then here 20, then again come back 20, then down by 10, then again here go by 40, again 10 up, and then again 10 down, then again 40 here, and now we can just go here 20, then 20 40, then 40 and 40 80. So I have to give 80 here, and I have to go up here and enter. You can just see that. So all these dimensions are in the multiple of 10, but this isometric drawing very fast I have drawn by using polar tracking and polar distance option. So polar distance option, I have clicked on the right click on the snap mode, go to setting, and I have just made it polar snap on. Once I have made the polar snap on, I can able to type the distance as 10, 5, 20, whatever it is. So at this time I have used 10, and so that you can just use the dimensions if they are in the particular multiple values. So you can use that distance
and then you don't need to any coordinate from the keyboard, you don't need to type any distance, you don't need to type any angle, and with the polar distance and polar snap you can draw this type of object. So I have shown you this type of steps I have drawn. They are isometric angle. So this angle is 30 degree, this angle is 30 degree, but all the distances are in the multiple of 10. So the height is 10, the trade value is 20, height is 10. So accordingly I have tried to draw this type of steps. So this is the target for you. So there are some already drawings I have given to you, and the screenshot was already given to you for the isometric drawing. So that drawings you have to try at your home by using this polar snap and polar tracking. तो ये दोनों मोड का इस्तेमाल करके आपको ये पोलर स्नैप और पोलर ट्रैकिंग दोनों का इस्तेमाल करके यू हैव टू ट्राई टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ आइसोमेट्रिक ड्राइंग वेयर द डिस्टेंसेस आर इन पर्टिकुलर मल्टीपल ऑफ द वैल्यूज। तो आप यहाँ पर 5 या 10 को वैल्यू रख के सारे डिस्टेंस आप 5 या 10 के मल्टीपल में रख सकते हैं, और प्रोपोर्शनेट ड्राइंग निकालने के लिए you can use the polar tracking, that is F10, and then snap, that is polar distance. So once this work was over, then you have to again go to the snap mode, setting में जाएंगे और फिर से यहाँ से polar distance को निकाल देंगे and you will again click to grid snap. So that you have to remember. नहीं तो हमेशा AutoCAD में आपका सेटिंग बदल जाएगा और वो डिस्टेंस 10-10 लेते जाएगा. So you have to remove again that, and then again okay you can click OK. तो अभी आपका रेगुलर जो पोलर ट्रैकिंग है वही होने वाला है। सिर्फ अभी अब मैं ट्रैकिंग होगा मेरा अभी 30 डिग्री के एंगल में, बट नाउ एट दिस टाइम द डिस्टेंस विल नॉट ऑटोमेटिकली कमिंग, सो डिस्टेंस आई हैव टू टाइप, सो दैट आल्सो यू हैव टू सी दैट, बट बिकॉज द स्नैप मोड इज ऑन सो इट इज स्टिल टेकिंग द डिस्टेंस, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो पोलर ट्रैकिंग में आपका डिस्टेंस 10 का आपने रखा है तो 10 का डिस्टेंस अभी वो लेगा ही लेगा, सो दैट आल्सो यू हैव टू चेक इट। सो टू अवॉइड दिस you have to again go to snap mode, right click on the setting, and in the snap mode you have to click to polar snap, and polar distance को आपको फिर से यहाँ पर 0 कर देना है। So then only you can, but also you have to cancel the grid mode, so grid snap रखेंगे, polar निकाल देंगे यहाँ से। So then only it will again going to the normal mode। अब normal mode में फिर से AutoCAD हमारा काम करेगा। So at this present now I can close the snap mode only, सिर्फ पोलर ट्रैकिंग में कर सकता हूं। सो पोलर ट्रैकिंग करने से आपको कोई भी ड्राइंग बनाते समय आपको एक ग्रीन डॉटेड लाइन मिलती है जो एक पर्टिकुलर एंगल में होती है। अभी मैंने एंगल उसका 30 डिग्री रखा है तो मुझे हर 30 डिग्री के रोटेशन में डॉटेड लाइन मिलेगी। देखो यहाँ पर 30 में मिल रही है, अभी ऊपर में जाके 60 में मिलेगी, अभी ऊपर में जाके 90 में मिलेगी, अभी इधर में जाके 120 में मिलेंगी। सो डायरेक्शन यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस ग्रीन डॉटेड लाइन, एंड दैट डॉटेड लाइन इज शोन बाय द पोलर ट्रैकिंग मोड। So that is again one of the important mode where you can try to draw isometric drawing। और अन्य अन्य जगहों पे भी आपको जब भी एंगल ऑटोमेटिक लेना है so you can make it polar tracking on, so that फंक्शन बटन आप लोग यहाँ पर ऑन रखेंगे। so you have to see that there is another thing you have to remember, जब भी आपका ऑर्थो मोड शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पर you can just check it, suppose I will make it ऑर्थो मोड ऑन, तो आपका पोलर मोड अपने आप से ऑफ हो जाएगा। सो दैट इज द अगेन यूर थिंग, क्योंकि जब आर्थो मोड ऑन रखते हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन शुरू रहेगी, तो इंक्लाइन वाली जो लाइन है, एंगल वाली जो लाइन है 30 डिग्री वाली, तो पोलर ट्रैकिंग मोड अपने आप से ऑफ हो जाता है। यदि हम लोग पोलर ट्रैकिंग को ऑन करते हैं और आर्थो मोड शुरू है तो आर्थो मोड अपने आप से बंद हो जाएगा। सो दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। सो आर्थो मोड एंड पोलर मोड दे आर कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर। सो आर्थो मोड ऑन करते हैं तो पोलर मोड ऑन होगा तो अपने आप से बंद हो जाएगा, या फिर पोलर मोड ऑन है और आर्थो मोड ऑन करते हैं तो पोलर मोड अपने आप से ऑफ हो जाएगा। सो दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। तो एट ए टाइम हम लोग यदि आर्थो मोड यूज कर सकते हैं या फिर एट ए टाइम हम लोग पोलर मोड यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द चॉइस। सो यू हैव टू सी दैट what as per the your requirement you can make the use of this polar tracking mode। so this is the important thing that I have shown you। so another two important mode we have discussed today is, that is polar tracking, and another is polar distance, so with this you have to try the various drawings, that is isometric drawing। जैसे मैंने अभी यहाँ पर ये steps निकाल के बताया आपको isometric drawing में। So all the distances are in the multiple of 10. So this type of isometric drawing where the dimensions are in multiple of particular values. So you can also check one, एक भी ले सकते हैं आप। यदि एक लिया आपने डिस्टेंस, पोलर डिस्टेंस,
तो फिर आप 1 2 3 4 5 6 कोई भी डायमेंशन ला सकते हैं. सो दैट is also possible with the polar distance. You can keep it as 1 or 10 or 5 or 2, whatever you like. And in the multiple of that, you can take the automatic distance by the polar distance. तो उसके लिए आपको पोलर मोड ऑन करना पड़ेगा. तो F9 फंक्शन बटन है उसके लिए, और पोलर ट्रैकिंग के लिए F10 है. सो टुडे दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे. सो आई होप दैट यू हैव लर्न द इम्पोर्टेंट थिंग हियर. यदि आपको यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट होंगे उनको ऑटोकैड पहले से मालूम होगा, बट उन्होंने पोलर मोड के बारे में इतना डिटेल में कभी जाना नहीं होगा. दैट इज आई कैन मेक इट श्योर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट you can ask me in the chat box, or otherwise today we will close for the today's online class. We will stop here. So you can type your feedback in the chat box, and then after a few minutes, if you are having no questions, so then we can stop here. So today's exercise is you have to try to draw isometric drawing using polar tracking mode, angle set to 30 degree and polar distance set to 10. So that is the choice for you. So you have to try to draw that isometric drawings by using polar snap mode and polar distance mode. So thank you once again for joining this today's online class. Tomorrow there will be a Sunday, so I am having some meeting. So tomorrow there will be no class. So next class will be on Monday. तो आगे का क्लास मंडे को होगा. See you on Monday again. So just type your feedback: good, better, best, nice, thank you, see you, goodbye, or you can give your feedback in the chat box, and then after 2-3 minutes we will stop for the today's session. Thank you once again. Before closing the meeting, type your feedback in the chat box, so it shows your attendance. अटेंडेंस ट्रैकिंग के लिए ये फीडबैक यहाँ पर देना जरूरी है. सो आप शुरू से लेके अंत तक मीटिंग में बने थे, ये आपका रिकॉर्ड यहाँ से मिलता है. सो वेन एवर यू आर रिक्वेस्टिंग मी फॉर सर्टिफिकेट, तो मैं आपकी अटेंडेंस सबसे पहले ट्रैक करने वाला हूँ. तो 75% अटेंडेंस आपकी आनी चाहिए. So while measuring the angle, we can also consider the internal angle. So that is your choice, what you want to set for the polar tracking mode. तो जनरली पोलर ट्रैकिंग मोड के अंदर वहां पर मैं फिक्स में एंगल दिए है. सो इफ यू चेक आउट इन द ऑटोकैड, हम लोग यहाँ पर यदि देखते हैं, सो यू कैन जस्ट सी दैट दिस इज अ गुड क्वेश्चन. हियर you can see that now I will go to the AutoCAD and I will click on the right click on the polar tracking mode, and I will go to the setting. So you can see that here the incremental angle are already given, only you have to check it. So 5 रख सकते, 10 रख सकते, 15 रख सकते, 18 रख सकते, 22.5 रख सकते, 30 रख सकते, 45 रख सकते, 90 रख सकते. So these angles are already given. So if you keep it at 18, so you can make it 72 also. So all these in multiple of these values, you can have any angle with this. So generally 30 degree, 45 degree and 90 degree are useful to us. 90 degree तो ऑर्थो मोड से ऑटोमेटिक आ जाता है, तो हम लोग यहाँ पर 30 डिग्री रख सकते हैं हेक्सागोन के लिए, आइसोमेट्रिक ड्राइंग के लिए, और 45 रख सकते हैं ऑक्टागोनल ड्राइंग के लिए. So these two angles are normally used in the polar mode for the incremental angle. So you don't need to worry about the incremental angle, only you have to choose any angle from this only. So this is very simple thing, you can just take any angle from this. So I hope that today now your all the questions are now ended. So thank you once again. Just today we will now stop here for this online class. On Sunday there will be a holiday, and on Monday we will meet again. Thank you.